Hello and welcome. Welcome to learning session number 2 of chapter number 8 of Science 2, which is cell biology and biotechnology. So far in this chapter, what all have we seen? We had seen cytology, which is cell biology, and we had seen stem cells. What are stem cells? Stem cells are the type of cells from which all different types of cells are made. Okay, सबसे पहले stem cells होंगे और उन stem cells से अलग अलग type के cells बनने वाले हैं. So we had seen what stem cells are in our last learning session. Okay. Today we are going to see stem cell research. Stem cell में क्या क्या research हो रहा है? We are going to see two types of stem cells: embryonic stem cells and adult stem cells. Then we'll switch to uses of stem cells, and again there are two major uses of stem cells. First is regenerative therapy, and second one is organ transplant. And for organ transplantation, you need someone to donate organs and donate bodies. Okay, so all these things we're going to cover in today's learning session. Your objective for today is going to be students will be able to explain stem cell research and uses of stem cells. Okay, stem cell research तुम्हें explain करना आना चाहिए. Uses of stem cells क्या क्या है ये पहले enlist करने आना चाहिए, and only once you enlist you'll be able to explain each and every one of the uses. Okay, these are the new words we're going to learn today. First one is conception, next is revolutionary, third is liberal, and fourth one is physiological. Okay, how do you pronounce this? Physiological. Okay, so these are the new words we'll learn today. So let us begin with stem cell research. So in biotechnology, again, what is biotechnology? It is made of two words. Bio means living, or you can also call it biology. So the first half is bio, means living or biology, and the second one is technology. So biology plus technology तुम्हें biotechnology मिल जाएगा, या फिर living organisms में अगर तुम technology बना रहे हो, technology develop कर रहे हो, that will be called as biotechnology. Okay, so in biotechnology, stem cell research is a revolutionary event after cloning. तो क्लोनिंग तो है, क्लोनिंग का मतलब क्या है? सेम टाइप का चीज या सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म बना देना, कॉपी बना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं क्लोनिंग. किसी को कॉपी, राइट? सो क्लोनिंग यानी कॉपी बनाना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सो क्लोनिंग के बाद में जो सबसे रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली चेंज करने वाला इवेंट है. ओके, रेवोल्यूशनरी यानी पूरी की पूरी तरीके से चेंज लाने वाला चीज. So stem cell research is very revolutionary, okay, in biotechnology after cloning. Next, this technique has the potential of bringing about the fundamental changes in medical science. बहुत ही important और काफी basic चीजें change करने लायक है. कौन सी टेक्निक? स्टेम सेल रिसर्च वाली. ओके, किसमें? मेडिकल साइंस में. So depending upon the source मतलब कहाँ से आ रहा है. Okay, so depending upon the source, stem cells are of two types. Stem cells तुम कहाँ से ले रहे हो, वो कहाँ से आ रहे हो, उसके ऊपर से दो टाइप के बनते हैं. First is embryonic stem cells and second one is adult stem cells. We'll look at both of them in detail now. So the first one is embryonic stem cells. Okay, so division of the zygote starts and thereby it is converted into embryo. We had seen this same diagram in the last learning session as well, right? You take a female gamete and you take a male gamete, both of them combine in the process called as fertilization, and through fertilization a zygote is formed. Okay, तो पहले उन्होंने बोले division of zygote starts, तो zygote divide होने शुरू हो जाता है, and from that division you get embryo, right? So that zygote is then converted into embryo. That's your point number 1. Next, cells of embryo undergo repeated mitotic division. Okay, so there are two types of division, mitosis and meiosis, right? Both of them we have studied in detail in our previous chapters of Science 2. So, एम्ब्रियो जो है, एक बार एम्ब्रियो बन गया, अभी एम्ब्रियो में से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना है, राइट? एम्ब्रियो में से एक नया बेबी बनना चाहिए. सो अगेन एम्ब्रियो स्टिल स्मॉल, इट्स नॉट डेवलप्ड येट. सो एम्ब्रियो में से नया ऑर्गेनिज्म बनने के लिए रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होंगे. ओके, रिपीटेड माइटोटिक यानी माइटोसिस होगा, माइटोसिस प्रोसेस या फिर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा. ओके, ये किसमें हो रहा है? ये एम्ब्रियो में हो रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, cell differentiation starts from 14th day of conception or conception, not but conception. Okay, so what is conception? Conception is the beginning of pregnancy. Okay, what is conception? Beginning of pregnancy, और generally हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, see when the female gamete and the male gamete they combine to form the zygote, generally we call that as the beginning of pregnancy. Okay, so what is conception?
is the beginning of pregnancy. तो एक बार pregnancy शुरू हो गई उसके बाद से 14th day पर differentiation चालू हो जाएगा. What is differentiation? We know that स्टार्टिंग में सिर्फ स्टेम सेल्स होंगे और फिर वो स्टेम सेल से अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं, राइट. सो जो प्रोसेस है ऑफ stem cells being converted into different types of cells, that process is known as differentiation, which is made of the word different. Okay, so stem cells से different cells बनने वाले, different types के cells बनने वाले, that is called as differentiation. ये कभी होने वाला है 14th day of conception के बाद से. Okay, so pregnancy start होने के 14th day के बाद ये process शुरू हो जाएगा. Cells of different organs like osteocytes. Okay, how do you pronounce this? OS is os, TEO is TO, CYT is sites. So osteocytes किसका नाम है? बोन सेल्स का नाम है. बोन सेल्स को osteocytes बोलते हैं. Then hepatocytes है, HE है, PA is per, TO is to sites. Hepatocytes. Okay, hepatocytes. So what are hepatocytes? They are liver cells. Liver cells को क्या बोलते हैं? Hepatocytes बोलते हैं. And neurons. Neurons you all know, right? Neurons are used in your nervous system, related to your brain and your spinal cord. Okay. So cells of different organs like bone के cells osteocytes, liver के cells hepatocytes, brain के cells neurons. ये जो अलग अलग organs के अलग अलग cells होते हैं ये differentiation की वजह से बनते हैं. Okay. पहले stem cells होंगे और फिर अलग अलग type के cells बनेंगे. So embryonic cells before division, or no, this is not division, differentiation. Embryonic cells before differentiation are called as embryonic stem cells. तो जो अलग अलग टाइप के सेल्स बन रहे हैं उसके पहले जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो में होते हैं, राइट. इसको एम्ब्रियो बोलते हैं. पहले जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा. एम्ब्रियो में ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं. ओके. एंड वो डिफरेंशिएशन के पहले होने चाहिए. वंस द डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स, वो जो स्टेम सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स बनने लग गए फिर उसको तुम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स नहीं बोल पाओगे. वो जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसके पहले होना चाहिए. अलग अलग सेल टाइप के सेल्स बनने से पहले जो सेल्स होंगे उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलोगे. ओके, सो दैट वाज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. सो there are 220 different types of cells in human body and all of them are formed from single type of cells. Okay, जो 220 टाइप के अलग अलग टाइप के सेल्स है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बनता है which are embryonic stem cells. Okay, and this diagram also we had seen in the last learning session. Stem cells से अलग अलग टाइप्स के cells बनने वाले हैं. Thus stem cells are undifferentiated cells with self multiplying ability and they are the parent cells of all types of human cells. It was a long sentence. Let's break down the sentence. Okay, stem cells are undifferentiated. So undifferentiated का मतलब क्या है? We know that जब भी UN starting में लगता है किसी वर्ड का यानी वो उसका opposite है, तो UN को हटा दो. Differentiated. Differentiated यानी क्या? जो already differentiation हो चुका है. Okay, differentiation is the process through which stem cells get converted into different type of cells, right? तो ये stem cells से अलग अलग टाइप के जो cells बन रहे हैं उस process को differentiation बोलते हैं. So जिसका differentiation नहीं हुआ है, differentiation का opposite, that is called as undifferentiated. तो stem cells क्या है? Undifferentiated cells, क्योंकि अभी तक उनका differentiation नहीं हुआ है. Next, self multiplying ability. Multiplication से generally number बड़ा होता है, right? 2 into 3 6. So 2 and 3 those are small numbers. 2 multiplied by 3 6 बड़ा number हो गया. So number increases. So multiplying यानी क्या? Increase in number. Okay, multiplying means increasing number. तो अपने आप से उसका number बढ़ेगा. Okay, so ये जो स्टेम सेल्स है ये और नए स्टेम सेल्स भी बना सकता है, राइट. यानी वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है. एक स्टेम सेल के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है. ओके, स्टेम सेल्स. एंड दे आर पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स. क्यों पेरेंट सेल्स? क्योंकि स्टेम सेल्स में से बाकी सब टाइप के सेल्स बन रहे हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एज pluripotency. Okay, how do you pronounce this? PLEU, plu. RI is re, PO is po, TEN is ten, CY is C. Pluripotency. I said pluripotency earlier, right? It was wrong. Okay, it is pluripotency. Okay, not pluripotency but pluripotency. Okay, so कौन से प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं? जो स्टेम सेल्स का प्रॉपर्टी है खुद को मल्टीप्लाई करके अलग अलग टाइप के सेल्स बनाना, उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी. ओके, नेक्स्ट, it has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation,
on the 14th day, that is during 5th to 7th day, and kept in a laboratory, they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissues and finally into organs. Okay, so अभी हम लोग को पता चल गया कि स्टेम सेल से बाकी सब टाइप के सेल्स बनते हैं, राइट? और ये स्टेम सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स बनना कब शुरू हो जाते हैं? वो लोग 14th डे पे, 14th डे आफ्टर कंसेप्शन, तब वो स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं. तो अगर तुम लोग ने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लिया, ओके, बट तुम्हें कब कलेक्ट करना होगा? 14th डे से पहले कलेक्ट करना होगा कि 14th डे पे डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा, राइट? सो 14th डे से पहले मतलब क्या? 5th टू 7th डे, उन दोनों के बीच में अगर तुमने स्टेम सेल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसको लेबोरेटरी में रख दिया, ओके, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल्स. अगर एक बार स्टेम सेल्स तुम्हारे हाथ में आ गए खुद के, then you can transform them into different types of cells, okay, and from those cells you can make tissues, and from those tissues you can make organs. Okay, so it was a long sentence. Again, whenever you read very long sentence, try to break it up into small sentences. Okay, अगर तुम लोग ने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को 14th डे से पहले यानी 5th से 7th डे के बीच में कलेक्ट करके लेबोरेटरी में रख दिया, तो फिर उन स्टेम सेल्स को तुम अलग अलग टाइप के सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और अलग अलग टाइप के सेल्स से अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिलेंगे, अलग अलग टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन्स भी बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट एडल्ट स्टेम सेल्स. तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमारे बॉर्न होने से पहले मिलेंगे, राइट? यू विल गेट स्टेम सेल्स बिफोर यू आर इवन बॉर्न, बिकॉज दे आर इन द यू गेट देम इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट? जब तुम एम्ब्रियो हो तब बनते हैं स्टेम सेल्स, और उसके बाद तो डिफरेंशिएट हो जाता है. But what if you're already born and you want stem cells now? If I'm already born now and I want to collect my stem cells, is that an option? The answer is yes. Okay. So stem cells can be obtained from the body of adult person also. Okay, and this we had seen, both these diagram we had seen in the last learning session as well, right? We had seen that there are three main sources यानी जहाँ से तुम collect कर सकते हो of stem cells in the body of adult persons. First is red bone marrow. So bone के अंदर दो टाइप के मैरो होते हैं, एक होता है येलो मैरो, एक होता है रेड मैरो. जैसी once you're born, this will be completely filled by red marrow. Okay, पूरा रेड मैरो से भरा हुआ है when you're just born, and as you keep aging, धीरे धीरे येलो मैरो बढ़ते जाएगा और रेड मैरो कम होते जाएगा. ओके, सो जनरली अगर तुम 20-30 एज के हो तो तुम्हारा ऐसा दिखेगा. ओके, इतना काफी कम रेड मैरो बचा होगा. So you can collect it from red bone marrow. Okay, then adipose connective tissue and blood, इन तीनों जगह से तुम stem cells collect कर सकते हो from an adult body. Okay, besides stem cells can be obtained from cord blood immediately after birth. Okay, so cord blood, again we had seen, whenever the baby is in the womb of the mother, it is connected to the body of the mother through a cord यानी एक ट्यूब होता है. Okay, and that is called as umbilical cord, right? उसमें से भी just after birth, उसको जब तुम कट करोगे उसमें से थोड़ा ब्लड निकलेगा, उस ब्लड को भी कलेक्ट करके तुम उसमें से स्टेम सेल्स निकाल सकते हो. तो you can also get you can also get stem cells from adults using these parts of our bodies. Okay, next let us move on to uses of stem cells. Stem cells के क्या क्या uses है? तो two major uses. First is regenerative therapy and the second one is organ transplantation. And regenerative therapy भी दो types के है. Cell therapy होती है उसमें, and there's another application use which is producing blood cells. Okay, let us again look at both of them in detail one by one. So first let us look at regenerative therapy. In regenerative, this is made by which word? Regenerative, this word is made up by regeneration. Again, regeneration दो word से बना है. Regeneration, right? Generation यानी कुछ बनना, produce होना, right? Re यानी वापस, right? So regeneration यानी वापस कुछ बनना, right? कुछ वापस बनना होगा, उसको हम बोलेंगे regeneration. उससे word बना है regenerative. Okay, so regenerative therapy में कुछ ना कुछ वापस बनते जाने वाला. So cell therapy, stem cells are used to replace dead cells in case of conditions like diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, etc. etc. So ये सब बीमारियों के नाम है. Okay, Alzheimer's एक बीमारी का नाम है, Parkinson's एक बीमारी का नाम है, डायबिटीज जो हमारे इंडियंस में काफी ज्यादा फैला हुआ है, अगेन एक बीमारी का नाम है. So all these are diseases, right? So in these diseases, some part of our body, some cells of our body are become dead. Okay, for example, Alzheimer's, I think it's related to your brain, right? So some of your brain cells will become dead. Okay,
So in all these diseases, some or the other cells of your body are going to become dead. Okay, they're going to be functionless, ठीक से काम नहीं करेंगे. तो अगर उनको रिप्लेस करना है, रिप्लेस यानी नया सेल्स आना चाहिए उसकी जगह पे. ओके, तो रिप्लेस करना है, यू कैन यूज सेल थेरेपी. ओके, नेक्स्ट अगेन ये कैसे यूज करोगे सेल थेरेपी? स्टेम सेल्स को यूज करके. उसके लिए स्टेम सेल्स होने चाहिए, तो ही, क्योंकि तुम्हें पता है स्टेम सेल्स कोई भी दूसरे टाइप का सेल में कन्वर्ट हो सकता है. And the second regenerative therapy is to produce blood cells required in conditions like anemia, leukemia, etc., etc. Okay, so many times there are some diseases, there are some conditions of body जहाँ पे body को enough oxygen नहीं मिल रहा. And oxygen क्यों नहीं मिल रहा? Because oxygen is generally carried through the entire body through blood cells. Blood will absorb oxygen and send it to or transport it to each and every part of your body. But अगर तुम्हारे ब्लड सेल्स ज्यादा नहीं है, ब्लड सेल्स कम हो गए, तो पूरी बॉडी को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. एंड अगेन वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस, राइट? फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन यू नीड ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी फॉर द डेली टास्क. सो इन केसेस लाइक एनीमिया एंड ल्यूकीमिया ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो ब्लड सेल्स को और प्रोड्यूस करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. Okay, I was sounding like Batman back there. Yes, feeling better. So एनीमिया और लुकीमिया जैसे कंडीशंस में अगर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने हैं, रीजनरेट करने हैं, देन यू विल यूज अगेन regenerative therapy using stem cells. Okay, so that was first use, जिसके अंदर ये दो uses आ गए of stem cells. Next is organ transplantation. Okay, transplantation से तुम्हें पता चल जाता है organ का मतलब क्या है. कहीं से तो निकाल के organ दूसरी जगह पे डालोगे, कहीं से कहाँ से निकालोगे? organ donor से निकाल के, उसके बॉडी में से निकाल के पेशेंट के बॉडी में अटैच कर लोगे. दैट इज organ transplantation. So in case of failure of organs like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. Okay, so अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें क्या किया हम लोग ने, किसी दूसरे जगह बॉडी में से निकाल के हम लोग ने पेशेंट के बॉडी में डाल दिया. बट अगर तुम्हारे पास स्टेम सेल्स है, यू कैन प्रोड्यूस देम विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स. ओके, स्टेम सेल्स को यूज करके एक नया किडनी बना सकते हो, स्टेम सेल्स को यूज करके एक नया लिवर बना सकते हो, और फिर बाद में उसको ट्रांसप्लांट करके उस पेशेंट के बॉडी में डाल सकते हो अगर वो ऑर्गन्स फेल हो गए तो. ओके, various organs in the human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons like aging, accidents, infections, disorders, etc. Okay, तो क्या समझो तुम बूढ़े हो रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई है, उन सब रीजंस की वजह से तुम्हारे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स या तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, लेस एफिशिएंट, यानी अच्छे से काम नहीं करेंगे. समझो योर लंग्स आर सपोज टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो पहले 100% काम कर रहा था, अभी 50% काम कर रहा है, सो लेस एफिशिएंट हो गया. ओके, और कंप्लीटली फंक्शनलेस, यानी कुछ भी काम नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, जरा भी प्यूरिफाई नहीं कर रहा है, सो कंप्लीटली फंक्शनलेस भी हो सकता है. और ये किसकी वजह से हो सकता है? बिकॉज ऑफ ओल्ड एज हो सकता है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शंस, एटसेट्रा. लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फेटालिटी में अक्कर अंडर सच कंडीशंस. तो अगर हमारे किसी ऑर्गन का एफिशिएंसी कम हो गया तो लाइफ काफी डिफिकल्ट हो सकती है. यू वोंट बी एबल टू वर्क नॉर्मली, यू वोंट बी एबल टू लिव नॉर्मली, और कैन ऑल्सो अकर इनटू फेटालिटी. फेटालिटी मतलब क्या? फेटालिटी यानी मर भी सकते हैं. ओके, however if a person gets the necessary organ under such conditions its life can be saved. बट अगर ऐसे कंडीशन में एक नया ऑर्गन मिल गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है, राइट? लाइफ कैन बी सेव्ड. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ओके, अगर समझो कोई डोनेट कर रहा है ऑर्गन, तो उसमें भी डोनर का अवेलेबल होना काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर समझो किडनी फेल हो रही है किसी की, इतना इजी नहीं होता कि अच्छा इसकी किडनी फेल हो रही है तो किसी डोनर को बुला लो, उसकी किडनी निकाल दो और यहाँ पे अटैच कर दो, हो गया. इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज फर्स्टली मेनी पीपल आर नॉट डोनेटिंग देयर ऑर्गन्स. इतने ज्यादा जितना डिमांड है उतना सप्लाई है नहीं. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. ओके, विल कम टू दैट लास्ट पॉइंट. सो ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज. हर इंसान के पास दो किडनीज है. As the process of excretion can occur with the help of single kidney,
पर्सन कैन डोनेट अनदर वन। तो सबके पास दो किडनीज है, बट जो फंक्शन है एक्सक्रीशन का वो एक किडनी से भी हो सकता है। ओके, सो जो दूसरी किडनी हो तुम लोग डोनेट कर सकते हो, कोई भी डोनेट कर सकता है। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स पे स्किन भी डोनेट कर सकते हो। स्किन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर बर्न विक्टिम्स। ओके, अगर किसी का स्किन जल जाता है तो उसके स्किन को निकाल के फिर दूसरा स्किन स्किन ग्राफ्ट कर देते हैं और डोनर डोनर से जो स्किन लेते हैं। सो अगेन, even if you donate your skin, it's very useful for people who have undergone accidents because of burns. Okay, so तुम्हारे कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में से स्किन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं पता है क्या? लोग सीधा नाइफ लेते हैं और स्किन को कट करते हैं। ओके, बट यू डोंट फील लाइक इट। ओके, ऐसा फील नहीं होगा तुम्हें कि कुछ कट हो रहा है, बहुत रेयरली फील होता है। तो इतना पतला लेयर निकालते हैं ना तुम लोग के स्किन का कि तुम लोग को पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट तुम्हारे बॉडी के लिए वो अच्छा है, क्योंकि ऊपर का लेयर निकल जाता है तो तुम्हारा नया लेयर बन जाएगा स्किन का। ओके, या सो वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, राइट। सबसे पहली बात, जितना डिमांड है ऑर्गन्स का उतना सप्लाई नहीं है। दूसरी बात है कि यू हैव टू लुक आफ्टर मेनी फैक्टर्स सच एज ब्लड ग्रुप। दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। जो डोनर है उसका कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल बॉडी होनी चाहिए, एज यंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल, आई मीन इफ द डोनर इज वेरी ओल्ड, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है डोनेशन से पहले। ओके, of the donor and recipient need to be paid attention during transplantation. So जब तुम किसी एक पर्सन का ऑर्गन निकाल किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में तुम अटैच कर रहे हो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, दोनों कोई डिजीज नहीं है, कंपैटिबल है दोनों दोनों की बॉडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड हेंस देयर इज अ वेरी ह्यूज लाइन ऑल्सो। अगर समझो तुम्हारा किडनी फेल हो जाता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग को एक एक दो दिन में नया किडनी मिल जाएगा किसी डोनर से। सो ऐसा लिस्ट होता है, बहुत ही लंबा लिस्ट होता है, एंड यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम अ रैंडम स्ट्रेंजर। काफी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर और डोनेशन के ऊपर, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, अगर समझो तुम किसी से भी जाके रैंडम पर्सन से अगर किडनी ले लेते हो, ऑर्गन्स ले लेते हो, व्हाट कैन हैपन इज गरीब लोग को फिर पैसों के लिए शायद ये करना पड़े, राइट। पैसों के लिए उनको करना पड़ सकता है कि अगर समझो कोई बहुत ही गरीब है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो फिर कुछ लोग आके बोल सकते हैं अच्छा हम लोग तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम मुझे अपना ये ऑर्गन डोनेट कर दो। ऐसा भी हो सकता है। तो अवॉइड करने के लिए किसी भी स्ट्रेंजर से नहीं ले सकते तुम लोग या तो फैमिली मेंबर से ले सकते हो, या फिर तुम्हें एक लिस्ट में अपना नाम लिखाना होता है और कौन तुम्हें डोनेट कर रहा है तुम्हें नहीं पता चलता। ओके, सो काफी सीक्रेट रखा होता है कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, ताकि ये सब चीजें ना हो। ऑल्सो इसका काफी बड़ा ब्लैक मार्केट भी है, जहां पे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बैन करता है उसका ब्लैक मार्केट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात, यू डोंट गेट अल्कोहल, दारू नहीं मिलती, राइट। सो दे हैव अ ब्लैक मार्केट इन गुजरात। इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात में कोई दारू पीता नहीं है, दे डू ड्रिंक अल्कोहल, but it's black market, government does not know about, I mean government knows about it but government को बोले बिना हो रहा है। Similarly you get organs online in black markets also. It's a problem that we as a society need to solve. It's a big problem and we need to come up with solutions as a society collectively so that it does not happen. Okay, next, however other organs cannot be donated during lifetime. तो ये तो lifetime में donate कर सकते हो, right? When you're living, when you're healthy, even then you can donate these organs. But there are some organs, कुछ ऐसे organs है जो तुम when you're living you cannot donate. For example, heart, right? Heart तो तुम्हारे पास एक ही है, तुम निकाल के किसी को दे नहीं सकते. You will have to keep it with you till the time you die, right? Similarly, liver, eyes, etc. ये सब तुम मरने के बाद ही donate कर सकते हो. Only after death you can donate these organs. Okay. So this has led. Okay, give me a minute. This has led to the emergence of concepts like posthumous. Posthumous का मतलब क्या है? After death. Okay, उसका meaning है after death. How do you pronounce this? P-O-S-T is post, H-U is hue, M-O-U-S is mus. Okay, posthumous. What does posthumous means? Posthumous is again made up of two words, post and humus. Post का मतलब है बाद में, उसका opposite क्या है? Pre. Pre यानी पहले, post यानी बाद में. So pre work का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज करने से पहले जो काम कर रहे हैं उसको प्री वर्क बोलेंगे। पोस्ट वर्क का मतलब क्या होगा? कोई भी काम करने के बाद जो काम करेंगे उसको पोस्ट वर्क बोलेंगे। ओके, सो प्री वर्क, पोस्ट वर्क,
So posthumous matlab after death. Okay. So this has led to the emergence of concepts like posthumous donation of body and organs. तो इसकी वजह से क्योंकि ऐसे कुछ organs है जो तुम मरने के बाद ही donate कर सकते हो, इसलिए भी नए concepts आ रहे which is donation of body and organs after you die. Okay. So human bodies are disposed of after death as per traditional customs. Okay, traditional customs यानी जो सालों साल तुम्हारे families में परंपरा है उसके हिसाब से bodies को डिस्पोज करना यानी फेंक देना. ओके, या फिर ठिकाने लगाना. ओके, सो ट्रेडिशनल कस्टम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में जनरली दे विल बर्न द बॉडी एंड दे विल टेक द एश एंड दे विल जस्ट submerge the ash, or they'll put the ash in a river or something, right? Or in the sea also. So that's Hindus. What will Muslims and Christians do? They will generally bury the body, right? वो लोग ground में दफना देंगे body को. Then there is Parsis. I think Parsis will leave the bodies for the birds to eat. Okay. तो सब सारे अलग अलग कल्चर्स में, दुनिया में अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं कि बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है. ओके. However, due to progress in science, it has been realized that many organs remain functional after certain period, even after death occurs under specific conditions. तो साइंस से प्रोग्रेस होने की वजह से क्या पता चला है कि मरने के बाद भी, इवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं अच्छे से. ओके. Concepts like organ donation and body donation have emerged recently after realization that such organs can be used to save the life of another needful person. So क्योंकि अभी हमें पता चला कि डेथ के बाद भी कुछ ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, इसकी वजह से भी ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन के कॉन्सेप्ट्स आ गए. ये क्यों आ गए? क्योंकि अभी हम लोग को पता चल गया कि अगर कोई if any person dies, even if the person is dead, you can take the organs of that person to save the lives of other people. That's what we have realized, and hence organ donation and body donation concepts here emerge हुए. Okay. A liberal view. What is liberal? Liberal means open to new ideas. Okay, if I say okay this person is a liberal person, इसका मतलब है कि नए ideas को अच्छे से सुनता है और consider करता है. Okay. So liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death, our body should be useful to other needful persons so that their miserable life would become more comfortable. तो एक नया आइडिया क्या है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी बॉडी किसी की काम आनी चाहिए. ओके. ताकि जो ऑलरेडी जी रहा है, जो अभी भी जी रहा है, स्टिल लिविंग, उनकी लाइफ थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाए. अगर वो लोग पेन में है, अगर वो लोग दर्द में, अगर वो लोग हार्डशिप में है, उनकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए. क्योंकि हम तो ऑलरेडी मर चुके, वी आर ऑलरेडी डेड, राइट? सो इवन आफ्टर डेथ our body should be used so that other people can live a better life because of that. Okay, that's a liberal view. Okay, एक नया idea है ये. Awareness about these concepts is increasing in our country and people are voluntarily donating their bodies. तो इसके बारे में बहुत लोगों को भी पता चल रहा है, बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन के बारे में. और काफी लोग वॉलंटरीली यानी खुद से, अपने आप से, बिना किसी के बोले, बिना पैसे लिए, फ्री में अपने आप से डोनेट कर रहे हैं अपने बॉडीज को. ओके. अगेन ये आफ्टर डेथ है, राइट? तो एक्चुअल में जब तुम जी रहे हो तभी कुछ नहीं करना है, तो बस एक फॉर्म भरना होता है एंड वंस यू आर डेड, the people who, I mean the organization you sign that paper with, they will come and they will extract a few body parts and they will leave the body with the family so that they can use it however they want, they can dispose it however they want. Okay. Life of many people can be saved by organ and body donation. Blinds can regain their vision. बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है organ and body donation से. और जो ब्लाइंड यानी पीपल हु कैन नॉट सी, राइट, दे कैन रीगेन द विजन. सो अगर कुछ लोग देख नहीं पा रहे अपनी आंखों से, अगर उनको कोई आईज डोनेट कर देता है तो उनका विजन वापस भी आ सकता है. ओके. वो लोग वापस देखना शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट, life of many people can be rendered comfortable by donation of organs like liver, kidneys, heart valves यानी हार्ट के ट्यूब्स. ओके. स्किन एटसेट्रा. तो बहुत सारे लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है अगर उन्हें डोनेटेड ऑर्गन्स मिल गए तो. Similarly, body can be made available for research in medical studies. Okay, this is an interesting point. Okay, so what do you think? How do
डॉक्टर्स स्पेशली सर्जन्स हाउ डू दे प्रैक्टिस देयर सर्जरी? ऐसा तो नहीं हो सकता राइट कि वो लोग कॉलेज गए, मेडिकल स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वो लोग ने बुक से सब कुछ पढ़ लिया, उन्होंने एक मॉडल भी देख लिया, मॉडल को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, फिर सीधा सीधा वो लोग एक्चुअल बॉडी पे सर्जरी करना शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है, उनको एक्चुअल में एक बॉडी दिखनी चाहिए, एक्चुअल में उनको ऑर्गन्स दिखने चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू डोनेट योर बॉडी, these medical schools, medical colleges take your body, एंड जो नए नए डॉक्टर्स बन रहे होते हैं वो लोग फिर तुम्हारी बॉडी को पूरा कट करते हैं. सो दे कट योर बॉडी, दे चेक योर organs, they predict कि अच्छा ये जो the person who has died, what is the reason because of which this person died, what disease is this, did this person have, what was the age of that person, was there any accident that the person went through. ये सारे analysis मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं. ओके, एंड इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग राइट. अगर तुम्हें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने भी मिलना चाहिए, और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने मिलना चाहिए तो उनको बॉडीज भी मिलनी चाहिए राइट. So only when people donate their bodies to medical schools, medical colleges, then people who are becoming doctors, who are being trained for becoming doctors, वो लोग तुम्हारी बॉडी को लेके फिर उसमें स्टडी कर सकते हैं, और उसमें अगर उनको प्रैक्टिस मिल गया, डेड बॉडी में अगर उनको प्रैक्टिस मिल गया, तो एक्चुअल में जब वो डॉक्टर्स बनेंगे और एक्चुअल में जब सर्जरीज करेंगे, देन दे विल हैव बेटर एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए ह्यूमन बॉडी राइट. So again, it's a very important application, and it's a great thing to do. Okay, and doctors really respect people who donate their bodies, because अगर उसके बिना अगर मेडिकल कॉलेजेस को डेड बॉडीज नहीं मिले जहाँ पे नए डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सके, we won't get good doctors. And everyone knows the importance of good doctors, especially in today's day. अगर अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, life can be very difficult, right? Okay. And again, there was this interesting scene in Munna Bhai MBBS. It's a movie. I'm not sure how many of you all have watched it. It was a movie which came out when I was little, but it's an interesting, funny movie. And उसमें इस कंसेप्ट के ऊपर काफी फनी सीन्स है कि अगर तुम्हें एक डेड बॉडी चाहिए मेडिकल स्कूल में तो तुम क्या क्या कर सकते हो. सो हाईली रिकमेंड इफ यू want to spend some time relaxing, watch Munna Bhai MBBS. Okay. Many government and social organizations are working towards increasing the awareness about body donation. ऐसे बहुत सारे organizations हैं, NGOs हैं, governments हैं जो लोग body donation के बारे में और लोगों को बता रहे हैं ताकि और लोग donate करें. Okay, and I've seen a few weddings. Okay, आजकल ये आजकल नहीं, कुछ साल पहले ट्रेंडिंग था और ये पॉपुलर था कि लोग अगर शादी कर रहे हैं तो शादी में वो लोग का एक बूथ ऑर्गन डोनेशन का होता है. So whoever is coming, all the guests who are coming to the wedding, they will see that booth, and there will be 2-3 people explaining what organ donation means, and all they have to do is sign a paper over there. Once they sign a paper, give their contact details, addresses, that's it. उतना ही होता है और कुछ नहीं करना तुम्हें. बाकी चीजें सब तुम once you're dead, all those things can be initiated. Okay, so it was in fashion a few days नहीं, few years ago कि wedding में एक organ donation का भी booth लगाते थे कुछ लोग. Okay. So these are the different types of, not different types, these are the different organs which can be donated. तुम आँख donate कर सकते हो, lungs, liver, bones, skin, kidney, pancreas, heart, ये सारी चीजें donate हो सकती है. So if you have donated your body, once you're dead, these people are going to come and they're going to take out your eyes, lungs, liver, ये सारी चीजें वो लोग निकाल लेंगे. बाकी की बॉडी वैसे के वैसे ही रख सकती है जो फैमिली को दी जाती है. And the family can do either they can burn that body according to Hindu traditions, or they can bury that body according to Muslim traditions, according to Christian traditions, or they can also give it to birds to eat according to say Parsi tradition, etc., etc. Okay, so कितने सारी चीजें. और समझो, if say for example one person dies, उसमें से आईज किसी दूसरे इंसान को मिल गया, लंग्स किसी दूसरे इंसान को मिल गया, बोन्स किसी दूसरे इंसान को मिल गया. सो बिकॉज ऑफ दैट वन ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी लाइव्स आर इम्प्रूविंग? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 people's lives are improving because of that one person deciding to donate their body, deciding to donate their organs. So it's such a good way to die, right? Even when you're dying, you're helping so many people after you're dying, right? It's such a good thing to do. Okay, so there are just two end of chapter questions which I wanted to discuss. This is the first one. Okay, what are the uses of stem cells? We just saw. So you should be able to recall them. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and recall कौन से 3 uses हम लोग ने देखे हैं stem cells के. आज ही देखा है, कुछ मिनटों पहले देखा है. So you should be able to remember it. Okay.
Okay, I hope you paused the video and are ready with the answers. The three uses of stem cells are first production of blood cells, अगर blood कम हो रहा है anemia, leukemia के conditions में. Next organ transplantation, नया organ बनाना है stem cells में से, या फिर cell therapy के लिए. Okay, cell therapy again gets like regenerative therapy, उसमें भी use होता. So that's your answer to that question. Next question is why some of the organs in human body are most valuable. कुछ organs इतने valuable क्यों है? Okay, so here's the answer. Organs like eyes, heart, lungs, pancreas, liver, bone, kidney, and skin play significant roles in various physiological activities. What is physiological activities? Physiological यानी normal functions of body. Normal functions क्या है? Breathing function है, respiration function है, digestion है, excretion है, circulation है. ये सारे normal functions है body को, इनको हम physiological activities बोलेंगे. तो ये सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में ये ऑर्गन्स जो है अलग अलग टाइप्स के वो काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी ह्यूमन लाइफ. अगर तुम्हें हेल्दी लाइफ जीनी है then these organs become very important. Okay, a person will not be able to lead a normal life if these valuable organs are damaged or absent. ये जो important organs है ये अगर या तो डैमेज हो गए या फिर गायब हो गए तुम्हारे बॉडी से तो तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, काफी डिफरेंट होगी तुम्हारी लाइफ. These organs can also be donated to save the lives of individuals in need. इन सारे organs को दूसरे लोगों की जान बचाने में भी use किया जा सकता है. Okay. During the life of an individual, certain organs like kidney, skin, etc. can be donated to people who have lost the function of these organs due to aging, accidents, infection, disorders, etc. Okay, जब तुम already alive हो, if you're still living a healthy human life, during your life itself, तुम कुछ चीजें donate कर सकते हो, यानी kidney, skin, etc. Kidney and skin तुम जब when you're living a healthy life itself, you can donate. Okay, and it can be donated to people who have lost the function of these organs जिनके ये organs खराब हो चुके हैं. I told you right, kidney कब खराब होती है? Generally kidneys are damaged because of drinking alcohol. If you drink a lot of alcohol, your kidneys will be damaged, and there are certain types of medicines and pills. For example, I remember reading somewhere that if you take a lot of painkillers, it's not good for your kidneys. सो किडनी उस रीजन की वजह से खराब हो सकती है. स्किन आई टोल्ड यू राइट, बोन्स, अगर तुम्हें बहुत सिवियर बोन्स हुए, फायर में तुम अटक गए थे और तुम्हारी स्किन बर्न हुए अगेन, और स्किन डोनेशन से तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है. तो अगर तुम इफ यू आर एजिंग अलॉट, इफ यू आर बिकमिंग ओल्ड, कोई एक्सीडेंट हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उन सब रीजन से अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑर्गन से तुम्हें काफी फायदा हो सकता है. आफ्टर डेथ, विच मीन्स पोस्ट ह्यूमस, organs like liver, heart, eyes can be donated. After you're dead, you can donate these organs. Okay, hence these organs in the human body are more valuable. ये सारे जो organs है, कुछ organs है काफी valuable इन सब reasons की वजह से. So that was your answer to the second end of chapter question for today. Okay, so that's it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me stem cell research? Can you tell me which are the two types of stem cells? Can you tell me in your body where are the places where you will find stem cells? Can you tell me the three uses of stem cells? Can you write a short note on organ transplantation or organ donation? If you can answer these questions, it means you have accomplished today's learning session. क्योंकि तुम्हें सब explain करने आना चाहिए orally, मुंह से, and in written form also, लिख के भी. Okay. So just check whether you've accomplished today's learning objective or not. These are the new words we learned. Conception यानी beginning of pregnancy, just fertilization के बाद से जो time होता है उसको conception बोलेंगे. Revolutionary यानी completely change करने वाली चीज. Okay, revolutionary यानी completely change करने वाली चीज. Liberal यानी being open to new idea. Physiological यानी normal functions जो होते हैं body के उससे related. Okay, so these were the new words we learned today. And that is it for this learning session. I hope you understood everything. I hope you also found it interesting. I think organ donation is very interesting. I think it's very important. I think everyone should donate their organs. All you have to do is sign a paper and everything will be done after you're dead. So डर लगता है, it's going to pain, this, that, you don't have to worry because you will anyway be dead. So many people, I hope you start talking about organ donation. I hope you decide to donate your organs because it's really helpful for the society. Okay,
So that's it for this learning session, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.